Hi, Mama. We are in live. Okay, sir. Okay, I'll wait for 1 more minute. Let's wait for some more people to join because like I will be continuing from where I left in the last session. So yeah, that's why. So let's wait for 1 more minute and then we'll start. Yeah, so is my screen visible? Is my screen visible? Yes or a no? मतलब screen दिख रही है ना मेरी? Okay, cool. Okay, so I'll start from where we left. So anybody remembers like what we were doing in my previous session? Anyone who can like do a quick recap? Anyone who remembers like what we were doing in my previous session? At which point we left? Sir, you said you will be discussing about how we can find eigenvectors when one Uh, of the eigenvalues are 0. right. So yeah, it's like काफी अच्छा लगा कि एक को तो याद है क्लिक चलो. So let's start. Okay, so we were like solving with the assignment question. Okay, the matrix was, if we like do a quick recap, okay, the matrix A was 1, -2, 2, and -1, 2, and -2. So like we were trying to find the eigenvalue decomposition of it. So like therefore A, like we were trying to write A in the form of U sigma V transpose, right? So we calculated this vector V transpose we were able to calculate. Okay, sigma was pretty simple to calculate, like it was just a singular value. This like we were not able to calculate. This was something that was really troubling us. Okay, so this U vector, it is made up of like it has three columns. The first column vector being U1, the second column vector being U2, and the third column vector being U3, right? So basically, like we only had one non-zero singular value. Like the rest of the singular values were zero, and we only had one non-zero singular value. And that non-zero singular value was 3 root 2. So we only had sigma 1, which was equal to 3 root 2. Okay. Rest sigma 2 was 0, and like sigma 3, so we don't even know, we were not able to calculate it. So the question was, how do we calculate U2 and U3? Okay, so now today we'll start and like we will be calculating U2 and U3. Okay, so let us say, so does anyone remember like what was U1? What was U1 that we got in a previous class? Okay, so yes, किसी को पता है U1 क्या हमने निकाला था? 1 - 2 2. Yeah, great. So basically, U हमने जो निकाला था, that is, it was, oh sorry. So U that we calculated was like it was basically after normalizing it, it was 1/3 minus 2/3 and 2/3. And we also discussed मतलब हमने intuition भी discuss किया था अपनी last class में कि इसका intuition क्या होगा, like ये U1 है, U2 और U3 का intuition क्या होगा? हमने किसी को याद है कि हमने क्या डिस्कस किया था? So basically, what are you? What is basically हमने U2 और U3 के लिए क्या डिस्कस किया था कि हमने intuition क्या डिस्कस किया था?
they will be orthonormal, or U1, Right. U2, and Yeah, U3 exactly. will be. Yeah, because A transpose A, sorry, A transpose, these are also the eigenvectors of A transpose. And we know that A transpose is a PhD matrix. So if A transpose is a PhD matrix, the eigenvectors of it will be orthogonal, and moreover, they will form a basis for R3. Okay, so let us say let U2 vector U2 equal to, let the vector U2 equal to x1, x2, x3, right? Okay, so now what will be the inner product of U1 and U2? Can anybody tell me the inner product of, कोई मुझे inner product of U1 और U2 बता सकता है क्या? 0. नहीं, इस टर्म से बताओ ना एक बार. So like it would be minus 1 by 3 x1. It will be X1 by 3. minus 1 by 3 into x1, minus 2 by 3 into x2, right? And plus 2 by 3 into x3, right? Right? And this should be equal to 0. If U1 and U2 are orthogonal, तो उनका inner product तो 0 होना चाहिए ना, right? हाँ या नहीं, मतलब कुछ. Yes, sir, right. Right? तो basically ये हो गया. Okay, so this means that minus x1, minus 2x2, बस सिंपली मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस x3, this should be equal to 0, right? So now what I'll do is, okay, now what I'll do is I'll say now I need to find a vector. Okay, so what I'm saying is, let us take x2 and x3 equal to, so let us take x3 equal to 0 and x2 equal to 1. Okay, so what will be the value of x1? Sorry, this is plus. 1 by 3 into x1 is plus. So this is plus. Okay, so now if I keep x2 equal to 1 and x3 equal to 0, what will be my x1? x1 क्या आएगा मेरा निकल के? 2, right? तो x1 आएगा 2. तो अभी हमें निकालना है u2, but I'm saying let us consider this vector w2. तो w2 is same again, u2 ही है एक तरह से, but अभी सिर्फ w2 उसको बोल रहे हैं. तो what is this w2 is अभी let, तो ये क्या आएगा? It would come out to be 2, 1 and 0, right? मतलब like this is u2 only. Let us not confuse it. Okay, this is u2 only. This is u2 only, right? Uh, so we will normalize it. Okay. So after normalizing, what we will get? So 2 by under root 5, 1 by under root 5. Sir, how we take x2 is equals to 1 and x3 is equals to 0? We just need to find one vector, at least one vector that is orthogonal to u1. So this is the standard trick. Okay. So this is the standard trick that you take one of the variable as 0 and the other variable as 1 and you'll find it. Okay. Just मतलब थोड़ा वेट करो, like you'll get to know कि हमने ऐसा क्यों किया था. तो एक वेक्टर हमारे पास आ गया, राइट? तो u2 is now एक चेक, हम चेक भी कर सकते हैं कि u2 and u1 are orthogonal or not. हम ये चेक भी कर सकते हैं. तो u2 and u1 are orthogonal or not. So u2 is this and u1 is this, minus 1 by 3, minus 2 by 3 and 2 by 3. एक बार चेक करना कि ये ऑर्थोगोनल है क्या. एक को एक चेक जल्दी से. आर दे ऑर्थोगोनल? Yes, they are orthogonal. Right, they are orthogonal. So we have one vector with us. Okay, u2. So u2 is done. Now we need to find another vector u3, right? Okay, now we have to find another vector u3. So again, let us start with the same equation. So u3 has to be orthogonal with u1, right?
U3 has to be orthogonal with U1 and U3 has to be orthogonal with U2. Okay, so keeping this condition, इस condition को let us keep apart अभी, मतलब like we'll not be using it right now. So like we will not be using it right now. We will not be using this equation right now. Okay, so let us we need to calculate U3, right? So I'm saying that let us first calculate a vector W3. Okay, let us first calculate a vector W3, which is again x1, x2, x3, right? So if W3, and again like W3 is orthogonal to U1, so when I like take the dot product and equate it to 0, जब मैं इसका ये W3 है मेरा x1, x2, x3 और U1 मेरे को पता है U1 is this, और जब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 करूंगा, what equation will I get? I'll again get the same equation. जो ऊपर आई थी वही इक्वेशन आएगी ना, बिकॉज सेम ही चीज कर रहा हूँ मैं अभी भी, हाँ कि ना? Yes, sir. राइट, तो सेम इक्वेशन आएगी ना, राइट? x2 plus x3 equal to 0. This is the equation that I will get, right? कोई कंफ्यूजन यहाँ पर अभी? ओके, तो अब x2 और x3 हमारे पास आ गया. तो लाइक पहले कंडीशन में हमने क्या लिया था? हमने लिया था इन फर्स्ट केस में हमने क्या लिया था? हमने x2 को 1 लिया था और x3 को 0 लिया था. ओके, in this case I'll take the opposite. सीधी बात है, अगर मैं सेम लूंगा तो I'll get the same vector u2 again, and I don't want u2. I now अब मुझे एक नया वेक्टर चाहिए, मुझे u2 नहीं चाहिए. तो another thing is that now I'll take x2 equal to 0 and x3 equal to 1. Okay, so what will be my w3 now? w3 क्या होगा अब? तो x3 1 है, x2 0 है, x1 क्या आएगा? x1 क्या आएगा? -2. -2. ग्रेट. ओके, तो अब ये W3 है मेरे पास. ओके, U1 मैं यहाँ पे भी एक बार लिख लेता हूँ. U1 was 1/3 -2/3 and 2/3, and U2 was, अभी हमने जो U2 निकाला था, that came out to be 2/√5, 1/√5 and 0. ओके, अब एक जल्दी से क्विक चेक करो, क्या W3 और U1 ऑर्थोगोनल है? क्या W3 और U1 ऑर्थोगोनल है? फटाफट से इनर प्रोडक्ट लेके चेक कर सकते हैं ना, और देख भी लाइक इट इज, मतलब इजीली विजिबल भी है. W3 और U1 ऑर्थोगोनल है? Yes, sir. यस, क्योंकि अगर हम इनर प्रोडक्ट लेंगे तो दिस विद दिस, तो -2/3 0 + 2/3, तो -2/3 एंड 2/3 कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट 0, राइट? ओके, अब कोई बता सकते हैं कि W3 और U2 ऑर्थोगोनल है क्या? मेरे को बता सकते हैं कि W3 और U2 ऑर्थोगोनल है क्या? इनर प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा? -2 × 2 which is -4/√5 and 0 and 0, right? This will be the inner product of U2 and W3. This will be the inner product of U2 and W3, right? This is the inner product of U2, na? U2 with W3. This is the inner product, right? Of U2 with W3. Hakina, guys. Yes, sir. इनर प्रोडक्ट ये है, तो क्या ये ऑर्थोगोनल है फिर U2 और W3? No. नहीं है, राइट? किसी को कोई कंफ्यूजन? तो
अभी पूछ लो एक बार। तो U2 and W3 आर नॉट ऑर्थोगोनल, बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि U1, U2, U3 शुड बी ऑर्थोगोनल, राइट? U1, U2, U3 all should be orthogonal to each other. Like you take any pair, मतलब कोई भी एक पेयर ले लो, उसमें से U1, U2 ले लो, U2, U3 ले लो, या U1, U3 ले लो, you take कोई भी एक पेयर ले लो, that should be orthogonal. Okay, that should be orthogonal. So now what we will do is that W3 और U1 तो orthogonal है, तो ठीक है, U1 तो W3 के साथ है orthogonal. तो पेयर क्या क्या होते हैं बेसिकली? U1, W1, U1, U2, सारे पेयर हमारे हमारे साथ सही है। लाइक अगर हम वो पेयर बनाए तो पेयर क्या क्या बन पाएंगे? U1, U2 एक पेयर, राइट? अगर हम कॉलम्स को ऑर्थोगोनल चेक करें, U2, W3 एक पेयर एंड U1, W3 एक पेयर, राइट? तो ये पेयर भी ऑर्थोगोनल है, हमने चेक कर लिया। ये पेयर भी ऑर्थोगोनल है, बचा सिर्फ ये पेयर। ओके, सो दैट इज व्हाई लाइक अपने इसको, तो हम अब U3 क्या होगा? U3 जो वेक्टर होगा, तो U3 जो वेक्टर होगा वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और ये वेक्टर होगा, ये होगा W3 माइनस, ओके। अब एक ये चीज समझो कि U2 और W3 अगर ऑर्थोगोनल होंगे तो दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ, मतलब ये एक स्टैंडर्ड तरीका है किसी भी दो वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल करने का, कि यू टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ वन और उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, सो दिस इज अगेन दैट आई डीकंपोज अ वेक्टर इन टू कंपोनेंट्स, और जो पैरेलल वाली जो उसके पैरेलल जो रिफ्लेक्शन आती है वेक्टर की, मैं उसको नलिफाई कर दूं, आई सिंपली सब्ट्रैक्टेड। ओके, सो मुझे W3 और U2 को अगर करना है ऑर्थोगोनल, तो आई डू इज W3 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ W3 on U2. Okay, just look at this equation and for at least 10 seconds and try to see like what is happening. और कोई confusion है तो feel free to ask. ओके, तो व्हाट वी चेक, हमने क्या चेक करा था कि U2 और W3 ऑर्थोगोनल नहीं है, और वो ऑर्थोगोनल होने चाहिए, राइट? ये पॉइंट समझ आया सबको? यस सर। ओके, तो अब U2 और W3 ऑर्थोगोनल होने चाहिए, पर U2 और W3 ऑर्थोगोनल नहीं है, तो इसका एक ही मतलब है कि हमें U2 और W3 को ऑर्थोगोनल बनाना पड़ेगा। तो U2 और W3 को ऑर्थोगोनल बनाना है अगर, तो दैट मीन्स हमें W3 में से, दैट मीन्स हमें W3 में से U2 को सब्ट्रैक्ट कर, मतलब प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा U2 की डायरेक्शन में, और उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा U2 में से, तो W3 में से उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देन ओनली लाइक वी विल बी एबल टू गेट, हम उनको ये ऑर्थोगोनल बना पाएंगे। तो दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड वे ऑफ, मतलब ये बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है। तो दिस इज कॉल्ड एज ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड एज ग्राम श्मिट, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, बट दिस वाज द इजीएस्ट वे टू एक्सप्लेन दिस सॉल्यूशन। ओके, so this is what is called as Gram-Schmidt orthogonalization. I guess ये थोड़ा सा इंट्यूटिव है कि अगर मैं एक वेक्टर है और मैं उसके पूरे पैरेलल वो किसी के वो, उसको मैं दो पार्ट में लिख सकता हूँ, राइट? एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। ओके, सो आई डाइव अ बिट डीप इनटू इट। ओके, तो कोई भी एक वेक्टर है x, ओके, और ये एक्सिस, कोई भी एक वेक्टर है x, हम इसको i कैप और j कैप की डायरेक्शन में लिख सकते हैं ना, राइट? हम इसको कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं ना, 2i कैप प्लस 3j कैप, 10 प्लस का भी अगर थोड़ा याद हो तो, जो भी है लाइक, ये i कैप j कैप वाली नोशन से फेमिलियर है सब यहाँ पर? Okay, let's, if not, so I'll just try to explain it using some other way. Sir, we are familiar. Okay, great, I guess. Okay, so I'll just proceed. Okay, so like the idea was that any vector z, let us say any vector z, it can be written as z as projection of z on a vector on any random vector y plus projection of z on y perpendicular. So एनी वेक्टर, तो तभी हम, अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सेस में भी देखते हैं
So if this is the coordinate axis and this is a vector 2, 3, if this is the point 2, 3, which means it is like it can be written as 2 times I cap. 2 I cap is this vector. This is the I cap direction. So it can be written as the projection of that vector in I direction and a direction which is perpendicular to I. जो I के perpendicular direction होती है उसको हम J बोलते हैं. तो एक वेक्टर है तो 2, 3 हम यही लिखते हैं ना कि ये 2 है और ये 3 है. तो any vector can be written in the form of projection of that vector on y. y कोई भी एक वेक्टर हो सकता है और projection of that vector on y perpendicular. ओके दिस ऐसे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, राइट? तो अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ. अब लाइक इफ आई सब्ट्रैक्ट z minus, if I write z equal to, z can be written as projection of z on y minus projection of z on y perpendicular. Okay, and I subtract this part. So I subtract z minus projection of z on y, मतलब z की projection y के ऊपर. So I'll only be left with minus projection of z on y perpendicular. मैं सिर्फ इसके साथ बचूंगा. Now this vector is perpendicular, which is equal to this vector. Projection of y on this vector is equal to this. So now this vector, projection of z on y perpendicular, this vector is perpendicular to y, because हम जिस पे प्रोजेक्शन लेते हैं हम उसकी डायरेक्शन में होते हैं. तो प्रोजेक्शन ऑफ z ऑन y परपेंडिकुलर मतलब हम y परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में, ठीक है? तो इसीलिए ये जो है दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ z ऑन y परपेंडिकुलर. दिस वेक्टर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ y. दिस विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ y परपेंडिकुलर. This will be in the direction of y perpendicular. Okay, this will be in the direction of y perpendicular. So basically now, so this vector is in the direction of y perpendicular, definitely like inner product of y and projection of y perpendicular on z. कोई बता सकता है इसकी वैल्यू क्या होगी? What will be this value? Inner product of y and projection of y and on z. कोई बता सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी? Inner product of y and projection of z on y perpendicular. So this will be equal to 0, as I said that जो ये वेक्टर है ये y परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में है और y परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर है, अगर मैं उसका y के साथ में इनर प्रोडक्ट लूंगा तो I'll get 0. ओके, सो सेम थिंग अब हम यहाँ पर भी वही करेंगे. सो व्हाट वील डू इज लाइक वी हैव टू फाइंड u3 we will like take our w3 that we have, जो कि हमारे पास था ऑलरेडी एंड जो कि u2 के परपेंडिकुलर नहीं है, एंड लाइक I'll simply subtract its projection on u2. So projection of u3 on w3 on u2. Okay, so first what I'll do is like I'll write the formula of projection of this projection of w3 on u2. Oh, so this projection is basically equal to inner product of u2 and w3 divided by inner product of u2 in u2. Okay, so कोई मुझे इस तो अब like projection of this is like what is projection of w3 on u2. तो कोई मुझे इसकी डायरेक्शन बता सकता है अभी क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ w3 on u2 की डायरेक्शन क्या है? किस डायरेक्शन में एक वेक्टर है ये? देखो ये एक स्केलर होगा, ये एक स्केलर होगा, ये एक वेक्टर है, तो सीधी सी बात है कि ये u2 की डायरेक्शन में ही है. दैट इज अ स्केल्ड वर्जन ऑफ u2. So that is why.
तो बेसिकली दैट इज वाई लाइक अगर हम अभी भी इसको चेक कर सकते हैं तो प्रोजेक्ट अभी अगर हम इनर प्रोडक्ट लेंगे इनर प्रोडक्ट ऑफ अभी अगर हम इनर प्रोडक्ट ऑफ U3 एंड U2 लेंगे तो कोई मुझे बता सकता है क्या आएगा अगर हम इनर प्रोडक्ट ऑफ U3 एंड U2 लेंगे so U3 is W3 minus projection I'll write the formula of it minus W3 U2 comma U2 in U2 with U2. Okay, so this is the inner product that you have to take. तो कोई इसको solve कर सकता है अभी? Like we are verifying whether U2 or U3 are orthogonal or not. And we know that U3 is this vector, W3 minus projection of W3 on U2, which is this vector. So we are trying to find out this. And like we know that जो W3 जो हमारा W3 vector है, this vector can be written like this vector, W3 minus projection of इतना sorry this and this U2 is as it is here. So किसको कैसे सॉल्व करूं मैं सबसे पहले तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूं यहाँ पे ही तो when I'll break it what will I get so okay let us continue so this will be W3 comma U2 inner product of W3 and U2 minus inner product of this whole thing inner product of U2 W3 comma inner product of U2 U2 with U2 and U2 okay any confusion मतलब like we all know that we can expand the inner product तो अब ये वाला तो ऐसे ही रहा W3 comma U2 okay minus so this part is a scalar right this part is a scalar and scalar को हम बाहर ला सकते हैं inner product के तो मैं इसको बाहर ले आऊंगा तो it will be U2 W3 upon inner product of U2 and U2 तो ये बाहर आया तो what is left inside is U2 comma U2 so this and this gets cancelled what I have is inner product of W3 comma U2 minus inner product of U2 and W3 this is what I'm left with तो कोई बता सकता है इसकी वैल्यू क्या होगी कोई बता सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी 0 वेरी गुड तो v 0 है ओके तो इसका मतलब है कि दिस इज इक्वल टू 0 इसका मतलब है कि यस अब हमने वेरीफाई कर लिया है कि U2 एंड U3 आर नाउ ऑर्थोगोनल गिवन दैट U3 इज दिस तो अब बस हमें फाइंड करना है U3 वी नो W3 वी नो U2 वी जस्ट नीड टू फाइंड U3 so to find it let us like get back to find it so U3 is basically what is U3 it is W3 what is W3 we just calculated W3 it was minus 2 0 1 minus okay this vector in the product of U2 W3 U2 U2 into U2 hat into U2 so this is this vector right so what will this vector be this is U3 right this is what is U3 is so we will just I have already like solved it and like after like solving it this is what we will be getting okay so inner product of U2 and W3
So what is the inner product of U2 and W3? Can like anyone calculate? We calculated it above. Can minus anybody 4 tell upon me? 500. Sorry, Minus 4 upon 500. minus 4 upon. 500. I guess we're missing one. No, it's not correct. Okay, so it is like inner product of U2 and W3. So this will be a scalar. This will be a scalar. Okay, and we just calculated it. Okay, no issues, like we'll calculate it again. So U2 is 2 by root 5, 1 by root 5, and 1 by root 5 and 0. This is what is U2. And this is what is W3. So the inner product will be minus 4 by root 5, right? Inner product will be minus 4 by root 5. So we already have a minus over here, and the inner, because this is W3, we have written W3 minus inner product of U2 and U3. The inner product is coming out to be minus 4 by root 5. Okay. Into, okay, another thing. What is this vector? Can anybody tell me? What is this? What does ये क्या signify करता है? So basically this is the unit norm vector, right? So this is the U2 itself because U2 is unit norm. तो इसीलिए हमने यहाँ पे like अगर हम इसको solve करेंगे तो we'll be getting back U2 because this value will be 1, right? ये value 1 होगी ना क्योंकि U2 हमारा unit norm है and this is norm का square. We discussed it previously, right? U2 का norm कितना है? ऑर्थो नॉर्मल हमने बोला था, नॉर्मी नॉर्मलाइज्ड इट, राइट? चेक कर सकते हैं यहाँ पे भी. तो व्हाट इज द नॉर्म ऑफ U2? नॉर्म ऑफ U2 क्या है? 1. 1. तो और वी नो दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ U2 विद इटसेल्फ इज द नॉर्म का स्क्वायर, राइट? यस और नो? Yes, sir. तो 1 ही होगा ना फिर 1 का स्क्वायर तो, राइट? तो इसीलिए तो ये वैल्यू 1 हो गई और सिंपली बचा क्या U2. तो U2 हम यहाँ पे लिख लेंगे अब. इट इज 2 by root 5, 1 by root 5 and 0. So when we multiply it, what we will be getting? So it is minus 2, 0, 1. Minus minus becomes plus, and it would be like minus 8 by under root 25, minus 8 by 5, minus 4 by 5 at 0. Okay, simply add it. So what we will be getting is this is 10 minus 2. So what will we get over here? Minus 18 by 5. We also have a minus over here. Oh, I'm just checking. We did a calculation mistake somewhere. Give me a second. I'm just checking. हम माइनस कॉमन ले चुके हैं इसलिए 8/5 के पास जो है वो माइनस नहीं होगा. Yeah. और यहाँ पर भी नहीं होगा फिर, right? जी. Yeah. Thank you so much. That's like what was troubling me. Okay, so अब हम like इसको solve कर सकते हैं. तो अब क्या आएगा? Minus 10 plus 8 minus 2 by 5, right? 4 by 5 add 1, right? This is what we will be getting, right? Simply add कर दिया 5 minus 10 plus 2. So minus 2 by 5, 0 plus 4 by 5, 5 and 1 plus 0. This is what we will get, right?
ओके, सो नाउ लेट अस जस्ट इसको नॉर्मलाइज कर देंगे हम, तो इसको नॉर्मलाइज कर देंगे तो दिस विल बी द फाइनल आंसर आफ्टर नॉर्मलाइजिंग इट, -2/√45, 4/√45, 4/√45, and like 5. Okay, so let us not write the answer directly, let us compute it ourselves. So what is the norm of this vector? What is the norm of this vector? It would be under root of 4/25, right? Plus 16/25 plus 1, right? So which is under root of 24 plus 16 plus 25 over 25, right? So which is equal to under root of 45 over 25, which is equal to under root of 45 over 5, right? This is the norm, right? This is the norm, right? हाँ या नहीं, मतलब यही है ना norm. Right. Okay, so now what we'll do is we'll divide every term by the norm. So -2/5, because we are normalizing it, divided by under root 45/5. Similarly, 4/5 divided by under root 45/5. And similarly, 1 divided by under root 45/5. So this 5 and this 5 will get cancelled, this 5 and this 5 will get cancelled, and this 5 goes up. So the answer that we'll have finally will be -2 by under root 45 and like 4 by under root 45 and like 5 by under root 45. This is 4. Okay, I hope like it was clear. It was a bit difficult question, but that's why like I really solved it in a very great detail so that सबको intuition तो मिल जाए at least कि like how things work. So मतलब each and every concept, मतलब हर एक concept बहुत ज़्यादा important है regarding the orthogonalization, and like it's not मतलब it's not that कि हम straightforward चीजें कर सके. So yeah, I hope like this is now clear, right? Okay, so now like it is up to you, like if you have any questions. So let us start with a doubt session now. So yeah, Sir, how we yes, find the minimum value of a vector when the constraint will be given? minimum value of a vector. हाँ, Basically, minimum value is defined of a function, not a vector. a vector So valued function. yeah, vector valued function is, it means that it takes a vector as the input and it gives a vector and it gives out some value. Okay, so it gives, okay, so let us say this is a vector valued function which takes a vector, basically a vector x. So which takes a vector x, and let us say x this is a function that maps R3 to R. Okay, so यहाँ पे सबको मतलब पता है कि what does it mean? It maps R3 to R. What does this mean? Yes, This sir. is a function. हाँ बताओ. In input we have 3 dimensions, and the output function there will be 2 one functions. dimension. Very good. हाँ काफी अच्छा. तो x जो x vector है, like it will be made up of x1, x2, x3, x2, x3, और at the output will be a constant, और जो output होगा वो एक constant होगा. So let us say that this is like this function only, a norm of x.
or let us say norm of x square this is. Okay, so this is a vector valued function, right? This is a vector valued function, right? मतलब ये सही है ना कि what will be the output will output x तो हमने बता दिया कि x1 x2 x3 है, what will be the output of it? Will it be a constant or not? It's a not constant. necessary. नॉर्म तो हमेशा कांस्टेंट देगा ना, अंडर रूट ऑफ नहीं, x1 नॉर्म हमेशा कांस्टेंट देगा, लेकिन r क्यूब इज रिलेटेड टू r ऑलवेज, नॉट r हाँ, not always, क्यूब. but not all. I'm not saying that it will be always. For this example, I'm saying that for this example, like this is a valid function, right? Which takes R3 to R because x is in R3. Okay, I'm just thinking इसके लिए तो ये सही है ना? Yes sir. Okay, okay. So now you are asking कि इसकी minimum value हम कैसे find करते हैं, right? Yes sir. Okay. So first of all, तो like इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट भी करनी चाहिए. तो देर आर सम फंक्शंस की जिनकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, और लाइक देर आर वी आल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज लोकल मिनिमा एंड समथिंग कॉल्ड एज ग्लोबल मिनिमा. तो बेसिकली हमारा काम हमेशा, हमें कोई भी एक फंक्शन दिया होता है, जैसे फंक्शन जनरली एक ये लॉस फंक्शन होता है, एंड वी नीड टू मिनिमाइज इट. दैट इज वी नीड टू लाइक फाइंड लॉस फंक्शन. जनरली वी नीड टू फाइंड सच एन एक्स. हमें एक ऐसे एक्स की जरूरत होती है. We need to find such a x such that f of x is minimum. तो कोई मुझे यहाँ पे बता सकता है कि क्या होगा यहाँ पे f of x, x की क्या वैल्यू होगी such that f of x is minimum? 0 0 0. 0 0 0 एग्जैक्टली. तो इससे कम, मतलब अगर मैं नेगेटिव में ही वैल्यू लेता हूँ तो वो स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगी. तो इससे कम, तो बेसिकली हमें ये वैल्यू निकालनी होगी. सो इसका एक तरीका जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है वो है ग्रेडियंट टीचिंग, राइट? So what you do is, suppose this is the function. This is the function. Okay. So basically you are at this point. Suppose. So you calculate. अब हम यहाँ खड़े हैं. Okay. So basically ऐसे समझते हैं इसको कि suppose मुझे, मैं भी दिल्ली में हूँ और मुझे यहाँ से like लेटेस्ट से मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है. Okay. तो what will I do? And मेरे पास गूगल मैप्स नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है. सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपने रूम से लाइक मैं पूछूंगा कि मुझे एयरपोर्ट तक का कोई रास्ता बता दो ताकि मैं एयरपोर्ट तक जा सकूं, राइट? सो मैं पहले एयरपोर्ट तक जाऊंगा, राइट? मैं किसी को सीधा ये नहीं बोल सकता कि आप मुझे मुंबई तक का रास्ता बता दीजिए. क्या अगर मैं किसी को ये बोलूंगा कि मुझे मुंबई तक का रास्ता बता दो तो कोई बता पाएगा क्या? नहीं बता पाएगा, राइट? मतलब अभी तो मैं यही एज्यूम कर रहा हूँ कि नहीं बता पाएगा. तो मैं उससे पूछूंगा कि ठीक है, आप मेरे को एयरपोर्ट तक का रास्ता बता दीजिए. तो मैं एयरपोर्ट तक जाऊंगा, फिर वहां से लाइक आई गो टू मुंबई, एंड मुंबई में जहां मुझे जाना होगा तो लाइक I'll be taking small steps every time. लाइक जहां से मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट से मुंबई लोकल टू मुंबई टैक्सी, ऐसे. ओके. तो ग्रेडियंट हम इस पॉइंट पे खड़े हैं, राइट? तो अब इस पॉइंट पे हम खड़े हैं, तो हम किस डायरेक्शन में जाए, हमें कैसे पता चलेगा? मतलब मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, मेरा गोल क्या है? एक था लाइक कैन यू टेल मी कि मेरा गोल क्या है? अगर मैं यहाँ पर अभी हूँ, व्हाट इज माय गोल? टू जो हमारा लोअर पॉइंट है वहां तक आना है हमको, राइट? यहाँ तक मुझे कर्व पहुंचना में है. जो, हाँ हाँ जी. ओके. तो अगर मैं यहाँ पर हूँ तो व्हाट विल आई डू? अब मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ? मैं इधर जाऊँ, मतलब लाइक आई गो दिस वे, आई गो अप, आई गो डाउन, मूव अलोंग द कर्व. मूव अलोंग द कर्व. ओके. तो मूव अलोंग द कर्व क्या होता है? तो बेसिकली व्हाट हमें डायरेक्शन कैसे पता चलती है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है? वो डायरेक्शन हमें ग्रेडियंट बताता है. तो मेरे को फंक्शन पता है, मैं रेट इस ऑफ पॉइंट चेंज पे, अलोंग द कर्व. राइट, रेट ऑफ चेंज अलोंग द कर्व. अलोंग तो द कर्व. हाँ, तो ग्रेडियंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा मैक्सिमम चेंज ऑफ फंक्शन होता है. मैक्सिमम चेंज जिधर हो रहा होता है. ओके. तो बेसिकली तो मैं तो ग्रीडी हूं ना, तो मैं वही जाऊंगा जहां मुझे ग्रेटेस्ट डिक्रीज मिलेगा. तो अगर मुझे इस डायरेक्शन में ग्रेटेस्ट डिक्रीज मिल रहा होगा, मैं डेफिनेटली इसी डायरेक्शन में आऊंगा, राइट? ओके. सो तभी हम ग्रेडियंट के ऑपोजिट में मूव करते हैं हमेशा. तो ग्रेडियंट वेक्टर हमेशा इंक्रीज की डायरेक्शन देगा. अब इस केस में तो ग्रेडियंट वेक्टर मुझे कहेगा कि आप यहाँ चले जाओ, तो मैं क्या कहूंगा? ओके. तो अगर ग्रेडियंट मुझे यहाँ कह रहा है
तो माइनस ग्रेडियंट की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट टू इट। अपोजिट टू इट। तो ठीक है, तो मैं अपने ग्रेडियंट की चुनूंगा और आई नॉट टेक अ वेरी लार्ज स्टेप। अगर मैं बहुत बड़ा कोई स्टेप ले लूंगा, सपोज आई टेक दिस स्टेप, अगर मैं इतना बड़ा स्टेप ले लूंगा, तो अगर मैं यहाँ मतलब तो मैं इवेंचुअली इधर कहीं आ जाऊंगा फंक्शन में। तो दिस इज वेयर आई एंड अप एट दिस पॉइंट, राइट? इफ आई टेक अ वेरी बिग स्टेप, अगर मैं इस डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा स्टेप ले लूंगा, तो दिस इज वेयर आई एंड अप। ओके, सो दैट इज वाई हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं। हर एक पॉइंट पे हम जाते हैं, हम पूछते हैं कि ठीक है इस पॉइंट पे आप मुझे ग्रेडियंट बता दो, तो फिर हम उस डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। तो फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। हो सकता है कि हम इसको स्किप कर जाए और हम यहाँ चले जाए, फिर यहाँ चले जाए, फिर ये कहेगा कि वापस जाओ, फिर इधर आएंगे, एंड दिस इज हाउ इट गोज ऑन। तो दिस इज हाउ द ग्रेडियंट डिसेंट वर्क्स। ओके, तो ये तो हो गया कि ग्रेडियंट डिसेंट कैसे काम करते हैं। लाइक इज इट क्लियर इतना ना? यस। ओके, तो अब जैसे हम लोग को अगर याद हो, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर, तो ये तो ग्रेडियंट डिसेंट है, दिस इज हाउ एल्गोरिथम्स वर्क। बट इसका एक सिंपल सोल्यूशन भी होता था, वो तभी एग्जिस्ट करता था कि अगर ये फंक्शन डबल डिफरेंशिएबल होता था। तो व्हाट वी डू, लाइक वी हैव अ फंक्शन, लेट अस से दिस एक्स स्क्वायर, वी हैव अ फंक्शन। ओके, ये तो सिंपल फंक्शन है, एक वेरिएबल का फंक्शन है। तो व्हाट वी डू इज टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। हम इसको डिफरेंशिएट करके इसको जीरो कर देते हैं, राइट? बिकॉज डिफरेंट। वी नो यस दैट, सर। हाँ, एट मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट वी नो दैट अगर कोई फंक्शन का मिनिमम पॉइंट है, या कोई सॉरी, अगर कोई फंक्शन का मिनिमम, सॉरी, दिस इज द फंक्शन, या फिर दिस इज द फंक्शन, तो इसका मिनिमम पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल हो जाती है, राइट? और इसके मैक्सिमम पॉइंट यस। पे टेंजेंट पैरेलल हो जाती है। तो दिस इज वी यूज तो देख, हम इसका एक्स स्क्वायर का हम लोग डिफरेंशिएशन लेंगे, तो 2x आएगा, इक्वल टू 0 कर देंगे, और फिर x आएगा, तो x इक्वल टू 0 आएगा। तो दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, राइट? एंड देन वी यूज द डबल डिफरेंशिएशन टेक्निक टू डिसाइड वेदर इट इज अ मैक्सिमा और अ मिनिमा, राइट? यस। यस। तो वो भी हम यहाँ पे जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं, उनके लिए हम ये भी यूज कर सकते हैं। तो दीज आर व्हाट आर कॉल्ड एज, आई गेस अभी तक वो क्लास में कवर हुआ नहीं है, बट दैट्स व्हाई आई एम सर नॉट लाइक, हाँ, प्रॉब्लम इज दिस, हाँ ये क्लास में कवर नहीं हुआ। मिनिमम वैल्यू निकालने में वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की और कंस्ट्रेंट भी दिया हुआ है, और टू वेरिएबल फंक्शन है। so that is the तो like the या तो हम key। कंस्ट्रेंट की वैल्यू को वहां रख के उसको सिंगल वेरिएबल में चेंज कर दें, हाँ, और उसके तो बाद यही मेथड लगा दें। हाँ, तो बेसिकली ये तो बस एक समझाने के लिए था, ट्यूशन देने के लिए था, कि ये एक इसको हम फर्स्ट ऑर्डर ऑप्टिमैलिटी बोलते हैं। ये यस फर्स्ट सर। ऑर्डर, लाइक कि हम इसको इक्वल टू 0 करते हैं। बट जो आपने बोला कि हमारे पास कंस्ट्रेंट्स भी है, कि आप हम्म। सिर्फ इसी जगह पे चल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप, जैसे मेरे पास हम्म। कंस्ट्रेंट है कि मैं फ्लाइट नहीं हम्म। ले सकता, मुझे सिर्फ ट्रेन यूज करनी है। तो आई नॉट गो टू द एयरपोर्ट, आई गो टू द रेलवे स्टेशन, राइट? भले ही शॉर्टेस्ट पाथ एयरपोर्ट वाला हो, बट आई नॉट गो टू द एयरपोर्ट। ऐसे ही तो बेसिकली यही ही क्लास में सर बताएंगे अभी, लाइक आपके नेक्स्ट सेशन में भी। लाइक अगर आप लोगों को डाउट होगा, तो एक बार फॉर्म फिल कर देना, सो दैट इवन आई कम प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओके, बट दिस इज व्हाट हैपेंस। सो बेसिकली आई विल टेल यू एक तो वी हम वो प्रॉब्लम को एक दूसरी प्रॉब्लम के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है? अगर हमारी प्रॉब्लम P1 है, सपोज P इज आवर प्रॉब्लम, तो और इट हैज कंस्ट्रेंट C, so we write a problem P dash which is equivalent to P, but it does not have any constraint. That constraints are, मतलब वो constraint खुद से ही प्रॉब्लम का एक पार्ट बन जाते हैं, एंड लाइक फिर हम वही वापस से अनकंस्ट्रेंट कर देते हैं। तो अभी के लिए बस इतना समझो कि जो ये कंस्ट्रेंट वाली चीज है, हम इसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है खुद से। तो हम उसको भी ट्राई करते हैं कि हम किसी तरह अनकंस्ट्रेंट चीजें लिख पाए। तो तभी हमने लाइक कॉन्वेक्स सेट, कॉन्वेक्स फंक्शंस में काफी काफी हमने पढ़ा था, ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज यूज करके पी को पी डैश की फॉर्म में लिख पाए, सी को पी और सी को इनकॉर्पोरेट करके यहाँ लिख पाए, फिर इसको सॉल्व कर पाए। तो या तो ये थोड़ा लाइक नाउ वी आर गेटिंग इनटू द रियल मैथमेटिक्स एंड रियल मशीन लर्निंग पार्ट। सर एक्सक्यूज मी सर, सर यस एक्चुअली यस। क्या है कि जो हमारा वीक 4 था उसमें ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया गया था कि कंस्ट्रेंट है और फंक्शन टू वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, एंड देन ओके वी फाइंड द मिनिमम वैल्यू फंक्शन, बट द ओके असाइनमेंट हैज अ क्वेश्चन लाइक दैट। ओके क्वेश्चन नंबर 3 ओके। ऑफ वीक 4, असाइनमेंट 4। कुड यू जस्ट अब रिपीट इट? आई टेक अ नोट ऑफ मैंने इट। ट्रिक यही लगाई है कि उसे अनकंस्ट्रेंट करने की कोशिश की, जो कंस्ट्रेंट था उसकी वैल्यू रख दी फंक्शन में, और उसके बाद यही
ग्रेडियंट ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करके फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर ली। तो वैल्यू तो सही आ रही है उन 4 ऑप्शंस में से, बट आई Okay. डोंट नो कि इट इज करेक्ट और नॉट। तो like वो fair question, like I've not really looked at that assignment at this point of time. एक बार मुझे आप repeat करना है, make a note of it. असाइनमेंट Week 4 4 क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, वीक 4। assignment. Okay, assignment 4 question 3. I'll like check with sir, and like I'll post the clarification on the discussion सर forum प्लीज only. क्वेश्चन नंबर 9 और देखिएगा फॉर Question सेम 3, question असाइनमेंट। 9. Okay, question 9. Okay, क्योंकि ये ना anything? डायरेक्टली हमारे जो कंटेंट है उसमें डिस्कस नहीं हुए हैं और हम लोग अभी इतना नहीं कर पा रहे हैं। Okay, I'll convey it. Any other feedback? सर इवन आई बिलीव कि जो असाइनमेंट में क्वेश्चंस होते हैं ना, दे सम टॉपिक्स आर लाइक सर हैज टच, ही हैज नॉट Okay, गॉन इनटू डीप, और okay. वो असाइनमेंट में तो मे बी ही इज ट्राइंग कि वी शुड ट्राई एंड रीड ऑन आवर ओन सो Yeah, दैट वी शुड लर्न। तो मतलब लाइक I'll tell you जितना मुझे पता है, तो बेसिकली दिस इज एन ऑनलाइन कोर्स एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि सब चीजें टच करें, बट वी वांट टू लाइक नहीं सर, टच गिव होना यू सर। चाहिए और बुक्स या तो बुक्स रेफर कर दीजिए कि उस जगह पर, क्योंकि सर मैं ओके, ऑलरेडी एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और मैथ्स टच सही है। तो ओके, मैं भी जो है क्वेश्चन नंबर जैसे 13 और 14 है, मुझे अभी सोचना पड़ेगा किस तरीके से सॉल्व करना है। 12 हो रहा ओके, है, कंटेंट से पढ़कर हो रहा है कि न्यूरल नेटवर्क का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज हो रहा है, लेकिन 13 और ओके, 14 में फिर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि एक्टिवेशन फंक्शन में ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेट कैसे निकालेंगे। वापस जाना होगा दोबारा से, और क्योंकि प्रॉब्लम सामने नहीं है, हमें उसको फंक्शन की फॉर्म में ही लिखना है। और ऐसे ओके, 11th क्वेश्चन है कि डायरेक्टली हम नहीं बता सकते क्यों एक पॉजिटिव से डेफिनेट है या नहीं है। मतलब इस तरीके से प्रॉब्लम्स ना माइंड में 2 बार कंटेंट रीड करने के सुनने के बाद भी हम चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। ओके। सो मतलब लाइक हम हमेशा ट्राई करते हैं कि मेजरली प्रॉब्लम्स ऐसे हो जो टॉपिक से रिलेटेड रहे हमेशा से क्लास में जो कराए, बट इवन लाइक क्योंकि ऐसे तो फिर समटाइम्स। एग्जाम में भी गड़बड़ हो जाएगी ना। यहाँ तो हम बुक्स रेफर कर लेते हैं, नेट रेफर कर लेते हैं, एग्जाम में तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, दैट इज लाइक तब तक तो लाइक यू विल बी प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम इफ यू लाइक डूइंग द असाइनमेंट्स। अगर तुम असाइनमेंट्स खुद से ऐसे अच्छे से कर रहे हो दिमाग लगाकर अपना पूरा प्रॉपर बुक्स रेफर करके, तो डोंट वरी फॉर द एग्जाम। ओके, अनदर थिंग इज दैट लाइक आई टेल यू कि इवन लाइक हम लोग पूरी कोशिश कर सकते हैं कि असाइनमेंट लेक्चर से हो, बट समटाइम्स इवन वी फील कि थोड़ा तो लाइक बाहर जाना पड़ेगा, लाइक एवरीथिंग नहीं, तो अगर। बाहर जाए कोई बात नहीं, कंटेंट वो हल्का सा डिस्कस हो जाए ना तो हम लोग समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है। अभी बात ही क्लियर ओके, नहीं हो पा रही है। ओके, सो या मैं ये सर को एक बार लाइक आई डिस्कस इट इन मेरी जो भी नेक्स्ट मीटिंग है सर के साथ, आई डिस्कस दिस विद सर। डोंट वरी, लाइक आई डिस्कस इट विद सर। ओके, या एनीथिंग एल्स? आई नहीं एम सर, अभी नॉट 4th असाइनमेंट करना है, कल लास्ट डेट है। ओके, ओके, so I'll just I like mail him right sir, I now. have one, actually I'm not able to understand this clearly, this necessary and sufficient condition, if you can explain it. The Sometimes it's a necessary. necessary and फॉर not कॉन्वेक्स sufficient, and फंक्शन। sometimes both necessary as well as sufficient. What is the main difference, or how we can come to know? Okay, so you're asking me what is the difference between the necessary and sufficient conditions. Yes, sir. Okay. So the as far as I know, the necessary condition is that like even if you prove that, like even if you prove it to be, if it satisfies that condition, so necessary means that it has to always satisfy. Okay, it has to always satisfy. Sufficient is a set. So even अगर sufficient में जितनी conditions है, even if that वो पूरा set of conditions is satisfied, we say that कि okay function is convex or set is convex. Okay, but अगर like नहीं है वो उतना satisfied, like अगर एक ही कोई condition होती है तो it is necessary. तो अभी तो शायद मैं इतना ही बता पाऊंगा, like I'll get back to you on discussion forum on this. I'll like even this is a good question, तो मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं अभी। I मतलब I'm also a bit confused about it. So I'll get back to you on discussion forum regarding this. I've taken a note of it. Any Okay, other thank you. question? मतलब अगर मैं अभी भी आंसर नहीं कर पाया, because like I'm मतलब मैं खुद अभी एक स्टूडेंट हूँ, तो I'll definitely like reach out to you on discussion forums. I'm taking a note of every problem that you're saying. Any other question? Any other question? Sir, I have couple of more doubts. Maybe I think time is over, so I will post them on discussion form.
better. Yeah, definitely. And in the other classes, like I thought that like because पिछले class में बिल्कुल कोई question नहीं होता, so that's why I simply started with the session. Otherwise, in the next session, I'll make sure कि हम भी पहले doubt से start करें एक बार. Or I think, sir, it would be better if we post the first questions on the discussion form. Then Exactly. you actually can come. So we have also released a form. I was just checking the form, like it does not had any question. So that is why. So if you like post the question beforehand, like even I will come prepared for it. Like I'll not give any of the shade. मतलब मैं कोई ऐसे shady answer नहीं दूंगा. I'll be less clear with it. So like this was a question U2, U3. I came prepared for it. So yeah, definitely try to fill up the form before the session. We keep checking the form and like we'll be prepared for that question. Okay, sir. Okay, yeah. Thank you so much for joining. Thank you, sir. Thank you.